Hello, students. Today I will take international relations where I have left in the earlier part. I have covered the summit part. Today I will cover India's relation with the various countries, and I hope you will enjoy this session. And I will just now start the session with India Bangladesh Treaty. You know, Sheikh Hasina visited India during the month of September 2022. It was a 3-day visit, and lot of agreements were signed between India and Bangladesh. And some of the very historic agreements were signed between India and Bangladesh at that time. There were many disputes at that time, which was not resolved. But still, we are on the way to resolve the disputes also. The important, I will try to highlight the important parts of the various agreements which this country, India, has signed with Bangladesh, and where are the areas of contention we have. We will try to resolve in the near future. The first point, India, Bangladesh offers Chittagong port for use to India. Bangladesh PM Sheikh Hasina offered India the use of the Chittagong port. This was a very long standing dispute between India and Bangladesh. Earlier, India was not allowed to use this port. Now, Sheikh Hasina has given a concession to India so that India can use this port. The first part of this sentence can be a question in your examination. Which port was offered by Sheikh Hasina to India to use it? They will be giving 4 ports. If you know the right choices, then only will be able to mark it as Chittagong port. Your question starts from the very first sentence. You will have 4 choices. There are many ports in Bangladesh. If you know the correct one, the Chittagong port has been given to India for its use. It was a long standing dispute between India and Bangladesh. India was not able to use some of their ports. It was a long demand of the from the Indian side. Since we are exporting lot of our goods from the waterways, why Bangladesh is not allowing us to use their ports? So this time, Sheikh Hasina allowed India to use their port. First, so this is the first question. It might come in the examination. ठीक है, ये पहला प्रश्न है जो आ सकता है परीक्षा में. किस पोर्ट को दिया गया था भारत को? आपके पास 4 पोर्ट के नाम आ जाएंगे. यदि आपको सही विकल्प मालूम है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपको वो कंफ्यूजन होगा. ठीक है ना? तो यदि आप ठीक ध्यान से मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको. ठीक है, द एग्जामिनेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कहाँ आपके पास सही विकल्प, आपके पास विकल्प होने चाहिए. सही विकल्प आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलवेज जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और विकल्प दिए रहेंगे. They will be asked you multiple choice questions and choices will be given, and some of the choices will be very closed. जो विकल्प रहेंगे वो काफ़ी करीब रहेंगे. आज के डेट में, आज के तारीख में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, वह विकल्प के लिए आपके पास बहुत सारे चॉइसेस नहीं है. द चॉइसेस आर वेरी लो, चॉइसेस बड़ी कम है. क्यों इस तरह से हो रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर वेरी लार्ज इन द एग्जामिनेशंस, इसलिए दे आर पिन पॉइंटिंग द चॉइसेस. आगे पहले तो यू कैन एलिमिनेट द चॉइसेस, अब उतने आसान नहीं है. इसलिए इफ यू नो द राइट थिंग देन ओनली विल बी एबल टू मार्क द आंसर. देखिए अब सेकेंड पार्ट में, सेकेंड सेंटेंस में यदि हम आते हैं, दिस पोर्ट वुड बी ऑफ बेनिफिट टू इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, particularly Assam, Tripura,
मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, देखिए असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, यहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो भारत के उत्तर पूर्व हैं, वहां पर 7 राज्य हैं, 7 स्टेट्स आर देयर। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, देयर आर 7 स्टेट्स, पर यहां पर सिर्फ 4 स्टेट को बेनिफिट मिलेगा। तो इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में जो प्रश्न बने जाएंगे, जो विकल्प आपको दिए जाएंगे, वहां पर चॉइसेस को कंफ्यूज कर देंगे। जो विकल्प रहेंगे, विकल्प में आपको दे देंगे असम के साथ अरुणाचल प्रदेश, सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प क्या रहेगा? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो इफ यू नो द आंसर्स करेक्टली, which port first India has been given access to the port, ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड, how many northeastern states will be benefited from this concession given by the Bangladesh? 3, 4, 5, 6, इस तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं। वहां भी एक क्वेश्चन बन गए। 4, नेम ऑफ द स्टेट्स दे देंगे, हाउ मेनी द नेम ऑफ द स्टेट्स दे विल ट्राई। तो यहां पर क्या है? असम, असम इज वेरी क्लोज टू बांग्लादेश, त्रिपुरा इज वेरी क्लोज टू बांग्लादेश, मेघालय एंड मिजोरम। असम, त्रिपुरा तो वेरी इजी है, दे हैव ए बॉर्डर विथ बांग्लादेश, बट मेघालय एंड मिजोरम, यहां थोड़ा सा जो एग्जामिनीज हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको परेशानी हो सकती है। इसीलिए ये दो जो राज्य हैं, मेघालय और मिजोरम, दोनों को याद करने का सही ढंग है 2M, दोनों M से स्टार्ट होते हैं, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस प्रश्न को हल कर पा रहे। देखिए अब सेकंड है, सेकंड पार्ट पे जब हम आ रहे हैं इसके, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, 4 तो शेयर कर ही रहे हैं। दे शेयर ए 1879 किलोमीटर बॉर्डर विद बांग्लादेश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दे, द लेंथ ऑफ द बॉर्डर शेयर्ड बाय द 4 नॉर्थ ईस्टर्न states. If you know the exact thing, then only you will be able to mark. यहां पर क्या होगा? They will give you some choices. 1800, 2000, 2200, 2500. तो राइट चॉइसेस क्या रहेंगे आपके? 2000 के करीब यदि आप रहोगे, 1879 में 1900, यू कैन मार्क अस 2000। यदि इस तरह के थोड़ा सा यदि गैप रहा चॉइसेस में, आपको यहाँ पर इस तरह के चॉइसेस नहीं मिलेंगे। 1879, 1888 इस तरह के चॉइसेस नहीं दिया जाएंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल लैंड मास है, या यू आर नॉट मेजरिंग विथ ए मेजरिंग टेप, तो देयर माइट बी सम वेरिएशन इन द क्वेश्चंस। इसीलिए यहाँ पर देयर विल बी ए वेरिएशन ऑफ हार्डली 50 to 100 किलोमीटर इन द choices. So if you know the right choice, if you know the 1900, then only you will be able to mark in the examination कि this is the right choice. Now I have done it rightly, I have done it correctly. ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट का क्या है? बांग्लादेश के साथ has been the key to the increase in bilateral engagement between India and Bangladesh in recent years. ठीक है, this part is not so important. This is only for your knowledge sake. The northeast, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है, that is
ओपन टू द बांग्लादेश बॉर्डर एंड वहीं से हमारा बायलैटरल एंगेजमेंट जितने भी होते हैं बांग्लादेश के साथ, वो नॉर्थ ईस्ट से ही हो पाएंगे. It will be done from the bilateral engagements. The word is bilateral. It is not trilateral or unilateral. If it is unilateral, then it is a single thing. Bilateral means इंडिया के तरफ से नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश के तरफ से और भी प्रोविंसेस हैं, चिटागोंग है, खुलना है, जो भी देयर आर डिफरेंट प्रोविंसेस देयर इन बांग्लादेश, उनके साथ एग्रीमेंट्स है. तो बांग्लादेश के साथ इंडिया के एग्रीमेंट है. तो 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व. व्हेन 2 इज इन्वॉल्व इट इज बाई. व्हेन 3 इज इन्वॉल्व इट इज ट्राई. व्हेन 1 इज इन्वॉल्व इट इज यूनी. तो प्लीज टेक केयर ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो when I am teaching and when you are studying also the textbooks. ठीक है. तो bilateral engagement between India and Bangladesh. This part is not so important, but इसमें एक part बहुत important होगा, which is the key. See here, the northeast has been the key to the increase. Here they will try to confuse the students with the choices. Northeast, Southwest, North India, South India. They will give you various choices. They will try to mix up. They will try to mix up, and they will say A and B, B and C, C and D, all of the above, none of the above. तो आपको तो ठीक मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन कौन राज्य हैं, विच आर द स्टेट्स इन्वॉल्व, देन ओनली यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर. स्टेट्स आप देख लिए, असम एंड त्रिपुरा, दिस आर द वेरी कॉमन स्टेट्स. ये वेरी कॉमन इनका बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ. पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा मेघालय एंड मिजोरम के साथ. ठीक है ना. There you will face a problem. ठीक है. If you know the other 2 states like Meghalaya and Mizoram, then you can mark the correct answer. यहाँ पर और एक important था. In March 2021, the prime ministers of the 2 countries inaugurated the Maitri Setu, a bridge built over the Feni River. Maitri Setu, Feni River. Here this is a very important part. What is the name of the Setu? What is the name of the bridge which was built over फेनी रिवर? फेनी रिवर के साथ और भी है. इसका जो सेकेंड लाइन होगा ना, सेकेंड लाइन ऑफ द दिस एंटायर पैराग्राफ, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर. दिस हैज अपीयर्ड इन द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो अपीयर्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. This question can be asked in 2 ways. Maitri Setu. Where is Maitri Setu located? First, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan. ठीक है. Maitri Setu is built over which river? They can ask you this question. They will give you 4 choices: Feni, Barak, Surma. These are all the rivers of Bangladesh. ठीक है. They will give this type of choices. Brahmaputra. People generally will mark Brahmaputra because then Bangladesh is with Brahmaputra and they will mark Brahmaputra, Ganges, Padma, etc. They will mark. It is a very typical river. It is Feni. So here
two questions can be asked. What is the name of the bridge? They will give you different name. Maitri, something else. 4 choices. Built over the river Feni. And they will also give you which river. And then can also give you the name of the river over which Maitri Setu is built. Okay? Now, this is very important part. This Setu has reduced the distance from Sabroom in South Tripura to the Chittagong port to just 111 kilometer. ठीक है? This is very important. It has reduced the distance, and sometimes they will ask you कि त्रिपुरा के किस भाग से बांग्लादेश को किस प्रदेश को जोड़ा गया था. ठीक है? Which part of India was attached to the part of Bangladesh? Tripura, which part of India? मैत्री सेतु में किस पार्ट, भारत के किस अंश को, किस राज्य को, उत्तर पूर्व के किस राज्य को जोड़ा गया था? त्रिपुरा को जोड़ा गया था. त्रिपुरा के सबरूम को चिट्टागोंग के पोर्ट से. डिस्टेंस तो हुआ 111 किलोमीटर. ठीक है, ये तो अलग बात है, ये तो ज्योग्राफिकल डेटा है. करंट अफेयर्स में, जीके में दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. और ये क्वेश्चन अपियर भी हुआ है एग्जामिनेशन में. मैंने काफी बैंक में आई हैव सीन दिस क्वेश्चन. त्रिपुरा के किस, भारत के किस पार्ट को बांग्लादेश के किस पार्ट से जोड़ा गया था? मैत्री सेतु से. तो भारत के त्रिपुरा राज्य को जोड़ा गया था. त्रिपुरा राज्य के किस जिले को? सबरूम जिले को. क्वेश्चन को थोड़ा और प्रेसाइज, नाउअडेज दे आर मेकिंग द क्वेश्चंस वेरी प्रेसाइज. सबरूम को जोड़ा गया था चिट्टागोंग पोर्ट से. एंड देयर वाज अ रिडक्शन इन डिस्टेंस. कितना हुआ था? 111 किलोमीटर. 111 किलोमीटर की डिस्टेंस की कमी हुई थी इसमें. ठीक है, तो देखिए, जब व्हेन आई एम टीचिंग यू, आई विल ऑलवेज टेल द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, and I will always teach you from the examination point of view. Also from the knowledge, you will also gain knowledge, but you have to get good marks in the examination. First you have to qualify. So we will always see that you qualify in the examinations. The examination में जब पढ़ेंगे किस तरह से questions रहेंगे, I am just telling you. And जहाँ जहाँ questions we had the opportunity to see the question papers of the various competitive exams, we will श्योरली गाइड यू कि इस तरह से क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में. यदि आप इस तरह से पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है, the government is working on a multi-modal transit hub at Sabroom that can help goods reach the चिट्टागोंग पोर्ट इन ए फ्यू आवर्स. ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक मल्टी मोडल ट्रांजिट हब बनाया है. ठीक है, इन सबरूम. सबरूम कहाँ है? दे विल आस्क सबरूम ऑलवेज. सबरूम कहाँ है? त्रिपुरा. ठीक है, एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया है जहां से हम वी कैन टेक द गुड्स to Chittagong port in a few hours. ठीक है, multimodal transit hub. ठीक है, which can help reach the Chittagong port in a few hours. ठीक है, this is a very important part, and this will help the goods reach the Chittagong port in a few hours. ठीक है, अब है रोड कनेक्टिविटी. रोड कनेक्टिविटी इन मेघालय, दाउकी, सदर्न असम, उत्तराखंडी एंड त्रिपुरा's अखौरा linking
ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश इज ऑल्सो बीइंग इम्प्रूव्ड. ठीक है. रोड कनेक्टिविटी. इंडिया हैज अ वेरी पुअर रोड कनेक्टिविटी विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज. भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के साथ, नेपाल, भूटान, चाइना, ठीक है, और एक तो सी के वाक से एक जो रास्ता है दैट इज श्रीलंका. श्रीलंका भूल जाइए, दैट इज ए वाटर वे, दैट इज ओशन है, जहाँ इंडिया नेपाल के साथ, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया हैज ए वेरी पुअर road connectivity. The condition of the roads with these countries, the border roads, are very poor from the Indian side and from their side. So we are not concerned from their side, we are concerned from the Indian side. अब उस देश के लोग ने नहीं बनाया तो उनकी समस्या है, पर हम जो गुड्स को ले जाएंगे, वहां तक जो पहुंचाएंगे, उनके बॉर्डर तक जो पहुंचाएंगे, उनके एरिया तक जो ले जाएंगे, वी डोंट हैव द गुड रोड्स. लीव अलोन बांग्लादेश, लीव अलोन भूटान, लीव अलोन चाइना, वी डोंट हैव द वेरी गुड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म विद दिस कंट्रीज. तो यहाँ पर जो है रोड कनेक्टिविटी इन मेघालय दाउकी, सदर्न असम उत्तरखंडी and Tripura's Akhora, linking eastern and southeastern Bangladesh is also being improved. देखिए यहाँ पर वेरी टिपिकल टर्म्स यूज हो रहे हैं. किस किस प्रदेश से किस किस रोड को इंप्रूव किया जा रहा है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मेघालय दाउकी, सदर्न असम उत्तरखंडी, त्रिपुरा अखौड़ा. कितने स्टेट इन्वॉल्व हुए नॉर्थ ईस्ट स्टेट के? 3 स्टेट्स आर इन्वॉल्व, मेघालय, सदर्न असम एंड त्रिपुरा. सदर्न असम वेरी प्रिसाइज. इन द एग्जामिनेशंस दे विल आस्क यू असम. जनरली दे विल नॉट आस्क यू सदर्न असम, नॉर्दर्न असम दे विल नॉट आस्क यू. Every probability, इतने precise questions they don't ask, they will ask you Assam. जैसे मेघालय दाउकी, असम उत्तरखंडी, प्लस अखौड़ा. तो यहाँ पर they will try to mix up. If you don't know the roads and the places with the states, there will be a confusion. यहाँ पर they will match the following. They will make a question match the following. तो यहाँ 3 स्टेट्स के नाम लिख देंगे, मेघालय, असम, त्रिपुरा, और यहाँ पर जगह के नाम लिख देंगे, दाउकी, उत्तरखंडी, अखौड़ा. नाउ यू टू मैच ए के साथ सी, बी के साथ ए, बी के साथ वहाँ के बी. यहाँ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे. मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में यदि आपको एक आंसर भी मालूम है, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू मैच, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट. बट हियर यू विल गेट ए ब्लाइंडर्स. दीज आर द नेम्स which is not very easy to recollect, so there will be some blinders also. So you will not be able to eliminate the choices. कि आपके जो choice दिए गए हैं match the following में, you will not be able to eliminate so easily because the northeast state names are bit typical. Generally people face problem while studying that part of the country. एंड नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चंस रहते हैं जनरली, और उधर आपको वेस्ट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं. सेंट्रल इंडिया के पार्ट से जनरली पीपल आर वेरी कन्वर्सेंट. फिर साउथ इंडिया से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहेंगे ज्योग्राफिकल पार्ट्स में, करंट अफेयर्स में, जहाँ नेम्स थोड़ा से टिपिकल आ जा रहे हैं. साउथ ऑफ द विंध्यास एंड नॉर्थ ईस्ट इज टोटली नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंडिया एक तरह से देखा जाए तो.
तो जनरली वहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं. नेम्स आर बी टिपिकल, तो वहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे. वेस्टर्न पार्ट, नदर्न पार्ट, यू आर वेरी फेमिलियर विद द नेम्स. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, bit typical. Southern states, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana. Telangana, to now it has a new state. Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala. You will face problems with the names there. तो इस तरह के names वहाँ दिए जाएंगे. And generally, remember in the examination, they will not give you any lollipops. They will not give you a sweetener. They will give you a bitter medicine. And they will want to test your knowledge. In the knowledge part, which I have just talked you, they will talk about these three, and here they will give a match the following questions. Apart from India-Bangladesh protocol route involving the Brahmaputra, cargo ships from Bangladesh have reached Tripura through the Gomti River and Assam Karimganj via the Kushiara River. This Kushiara River is the most important part in Indo-Bangladesh relation. Always remember this Kushiara River. This is the bone of contention between India and Bangladesh. Kushiara River. During my course of discussion, I will take up this Kushiara River. How many rivers are there between India and Bangladesh? There are 54 rivers between India and Bangladesh. This is also a very important question, and this has been asked in the examinations. How many rivers are there between India and Bangladesh? 54, 55, 56, 57. But actually there are 54 rivers between India and Bangladesh. This is also a very important part. Here, see, apart from the India-Bangladesh protocol route involving the Brahmaputra, I just told you, when we talk about Bangladesh, we always talk about Brahmaputra. People always, that river Feni, at that time I told you, a very typical, the name of the river is Feni. And most of the students will mark as Brahmaputra. The people knows that Brahmaputra river is there and they will mark it. See also, apart from the Indo-Bangladesh protocol route involving the Brahmaputra, apart, now they are saying apart, move apart from Brahmaputra. Cargo ships from Bangladesh have reached Tripura. See, I told you at that time also initially, Tripura and Assam are very close to Bangladesh. You will be able to recollect it very easily. Have reached Tripura through the Gomti River. This is a very typical river here there in Tripura. Gomati River. And Assam's Karimganj via the Kushiara River. Here Assam's Karimganj they will not ask you, they will ask Tripura through the Gomati River. Cargo ships from Bangladesh have reached Tripura through which river, and Assam through which river? Assam through Kushiara River. Okay? It is a very important part. Now Bangladesh has opened its longest bridge. That bridge is the Padma Bridge. The country's biggest development project since its birth in 1971. That was the long awaited Padma Bridge. When Bangladesh was born, see, here also it will be a question. The birth of Bangladesh. The birth of Bangladesh. When this country was born, 1971. And now, in the year 2021, Bangladesh has celebrated
is golden jubilee of its independence. From 1971 to 2021, it is 50 years, and Bangladesh has celebrated the golden jubilee of its independence. And the biggest river in Bangladesh is Padma River. And that river, this Padma River, is the land of is a boundary line between India and Bangladesh. We have a very different boundary lines between Canada and USA. There is a boundary line which is known as the 49th parallel. Between Pakistan and Afghanistan, there is a boundary which is known as the Durand line. Between India and Pakistan, there is a boundary line which is known as the Ratcliffe line. At that time, during the partition time, Ratcliffe came to India, and river boundary. At that time, the dispute was between Pakistan and India regarding the states to be handed over to Pakistan, and the states which are to come from Pakistan, which India has to annex from Pakistan at that time. The Ratcliffe line, Ratcliffe meant the river as the boundary. So at that time, there was no Bangladesh in the year 1947. It was Pakistan. Bangladesh came into being in the year 1971. So Padma was made a boundary between India and Pakistan. The other side of Padma will be Pakistan, and this side of Padma will be India. After 1971, after the liberation, after Bangladesh, Bangladesh was seceded from that part of that country, a new state, a new country came into being known as Bangladesh in the year 1971. Okay? So this is the very biggest river, and this was a very big development project. Okay? The main bridge is 6.5 kilometer long. And its total length is 9.83 kilometer. Okay? This is 6 point. What is the length of the Padma bridge? But it is a road cum rail. This is a very big bridge. It is a road cum rail bridge. And the main bridge is 6.5 kilometer long, and the total length is 9.83 kilometer. It is a road and rail bridge. Very important here. The Padma bridge constructed over the river Padma in Bangladesh is which type of bridge? Road, rail, road and rail, see above, none of the above. 4 choices will be given here. Generally bridges are road, but here it is a very unique thing, road and rail. Viaducts at the 2 ends, and 25, these things will not be asked in the examination. 25 kilometer, all these things, these are for the knowledge sake I have given you. Just for the knowledge, you must know this part, and this will be very important from the exam, not from the examination point. You must know that such a huge bridge has come up. Bangladesh has developed on its own without seeking any foreign assistance. It connects to Saryatpur and Madaripur. These are the important. See the typical names. It connects the Saryatpur and Madaripur in southwest of the country to the northern and the eastern regions. To the northern and the eastern regions. Okay. Which areas it will connect?
शरियातपुर एंड मदारीपुर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, linking the southwest of the country to the northern and the eastern regions, ठीक है, to the linking the southwest of the country to the northern and the eastern regions. It will connect Shariatpur and Madaripur. Very important part. Which part it will always see when a bridge is built, when we are talking about any bridge, know the length of the bridge, know the river over which it is built, know the places it will connect, and also know the reduction in the time and the distance. Whenever there is a bridge, 4 questions come into our mind. The bridge is built over which river? What is the length of the bridge? Which places it will connect? What will be the reduction in the travel time? What will be the reduction in the travel time between the 2 places? Suppose it connects 2 countries. How much will be the reduction time? And at what cost it was built? And with whose collaboration it was built? And what type of technology was used in that bridge? If you know these aspects while reading any bridge, you will be able to answer all the questions very easily. जब किसी भी पुल की आप बात करोगे, किसी भी पुल के निर्माण की आप बात करोगे, देखोगे ये पुल किस नदी पर बनाया गया, इसकी लंबाई कितनी है, किन प्रदेशों को जोड़ा गया, और समय और दूरी का कमी, कितनी दूरी और कितनी समय का बचत हुआ था इस पुल के निर्माण से, फायदा क्या क्या हुए थे इस पुल के निर्माण से। किसी भी पुल के निर्माण इस तरह से अंधेरे में नहीं किया जाता है, ये फायदे के लिए किया जाता है। व्यापार में कितने फायदे हुए थे, क्योंकि समय का बचत होते हैं तो ईंधन की कम खपत होती है। यदि सब सड़क के रास्ते से यदि आप जा रहे हो, यदि आपकी दूरी घट जाती है तो ईंधन की कम बचत होती है। ईंधन की यदि कम बचत होगी तो व्यापार में उन्नति होगी। तो एक प्रगतिशील दिशा में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, एक प्रगतिशील पथ की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। दे विल गो ऑन द अपर कर्व. Business will prosper with this type of bridges. Always remember the points which I have told you regarding the bridges. ठीक है. This bridge is expected to give the nation's development index a big boost and connect India directly to Dhaka through road, rail and ports. See, such an important statement I have written here, which I have told you. Now I am presenting in my slides, which I told you. नेशन के, राष्ट्र के विकास में, इन नेशंस डेवलपमेंट, व्यापार के प्रगति में, नेशंस इन बिजनेस प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस विल ऑलवेज ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू ए नेशन. बिजनेस कैन चेंज द फॉर्चून ऑफ ए नेशन. तो यहां पर देखिए, इट विल गिव द नेशंस डेवलपमेंट इंडेक्स. द वर्ड दे हैव यूज्ड, आई हैव यूज्ड हियर डेवलपमेंट इंडेक्स. आपके पास काफी इंडेक्स आएंगे. हमारा जो अर्लियर टीचर थे, जो आपको अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे, इकोनॉमी, ही वाज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. तो जितने भी इंडेक्स आएंगे लाइफ में, डेवलपमेंट इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स,
ये सब मापदंड हैं, इन्हीं मापदंडों के आधार पर ही आप आकलन करेंगे। These are the parameters. When some indexes are there, means there are some parameters, some indicators are there. कुछ indicators होते हैं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जैसे हमारे देश में केरल में शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, साक्षरता, लिटरेसी, ये क्या है? ये मापदंड हैं, ये इंडिकेटर्स हैं। केरल भारत के सर्वोत्तम स्थान पर है। केरला ऑक्युपाइज द फर्स्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी। आज से नहीं, काफी दिनों से। कर्नाटक, बैंगलोर लीड्स इन इन्वेस्टमेंट। बैंगलोर शहर में निवेश, सबसे ज्यादा निवेश यदि भारत के किसी शहर में आ रहे हैं तो बैंगलोर में आ रहे हैं, कर्नाटक के बैंगलोर में। ठीक है ना? तो इस तरह से देखिए, ग्लोबल नेशंस डेवलपमेंट इंडेक्स, ए बिग बूस्ट। एंड ये जो ब्रिज है, मैंने बोला ना, जब कोई भी पुल बनाए जाते हैं, वेन एवर ए ब्रिज इज बिल्ड, व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रिज? ब्रिज मीन्स इट विल कनेक्ट। हियर इट विल, दिस ब्रिज will connect India directly to Dhaka. What is Dhaka? The capital of Bangladesh. See, Indian side is now directly connected to Dhaka with this bridge. इसमें क्या होगा? इंडिया को बहुत, इंडिया विल बी बेनिफिटेड। इंडिया के जो भी गुड्स हैं, ट्रक्स हैं, जो रेल रूट से ही सिर्फ जा रहे थे अब तक, नाउ दे विल फॉलो द रोड। और यहां तो इस ब्रिज में रेल भी है, dedicated rail corridor is there in the bridge, so more goods will be carried from India to Bangladesh, and Bangladesh can send more goods to India. तो जो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, सपोज ट्रेड डेफिसिट है दोनों के बीच में, इट विल बी कवर्ड, इट विल कनेक्ट इंडिया डायरेक्टली टू ढाका। सी, the question will be like this: Padma bridge will connect India to Bangladesh, India to Nepal, India to Bhutan, India to Pakistan, none of the above, all of the above, this type of questions. ठीक है, 4 choices मैंने, I have made the 4 choices for you. The examiner can make different choices. If you know, the Padma bridge, which is built over the river Padma, will connect India directly to Dhaka. Suppose from the Indian side, they are not giving the name of the place. But if you know the Bangladesh side, that is Dhaka, the capital of Bangladesh, you will be able to mark the right choice. ठीक है? The distance through road, rail and port. See, इस लाइन में 2 to 3 points are very important. Very important from the examination point of view. The distance of Dhaka from the Indian border at Benapul. Virtually it will connect Benapul from the Indian side to Dhaka. Indian side will be Benapul. See, I am telling you, know the name of the places very well. नाम जानिए, भारत के किस साइड को जोड़ेंगे बांग्लादेश के किस साइड से। ठीक है, देखिए मैंने कहा था ना, आई टोल्ड यू अर्लियर, द रोड विल बी रिड्यूस्ड बाय 70 किलोमीटर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रेवल टाइम बाय 4.30 आवर्स। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच आई टोल्ड यू अर्लियर। नाउ इन माई स्लाइड आई एम नाउ गिविंग यू द करेक्ट डिस्टेंस एंड द टाइम। मैंने कहा था ना आपको, दूरी और समय दोनों की कितनी बचत होगी। जब किसी भी पुल का निर्माण किया जाता है
तो आपको दूरी और समय पर ध्यान रखना है. You have to keep a proper watch on the distance and the time factor. How much it will reduce? If you build a bridge, how much time it will reduce? How much less distance you have to cover? ठीक है. These are the two aspects always taken into consideration while building a bridge. So this Padma bridge will connect India's Benapul with Bangladesh Dhaka. Reduction in distance will be 70 kilometer and time by 4.30 hours. ठीक है. It will reduce the Kolkata Dhaka train journey also by half. Now the journey takes lot of time. Suppose it is 12 hours. Suppose it is 8 hours. It will now become 4 hours. Such a huge reduction. Suppose you are going to place, it takes 1 hour. But now you are going in 15 to 20 minutes. It will bring relief, no? You will be highly relieved. You are saving 40 minutes. You are saving 30 minutes. But in this type of bridge, you will be saving hours together. ठीक है. The Padma bridge. See, not only the Padma bridge will connect India, it will connect India, Nepal, China, Myanmar, Singapore and Thailand. See, how many countries it will link? India, Nepal, China, Myanmar, Singapore and Thailand. कितने देश को जोड़ेंगे? भारत, नेपाल, चाइना, चीन, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 countries. Such a huge bridge. 6-kilometer bridge, and it will be a link between India, Nepal, China, Myanmar, Singapore and Thailand. If you go to Bangladesh, you will be able to go to Nepal, China, Myanmar, Singapore and Thailand. Or this will be a major link of the Trans-Asian Highway Network. First question क्या आएंगे? This Padma bridge, which countries it will connect? यहाँ पर एक typical country they will add in the examination. Bhutan, suppose, Pakistan, Afghanistan, and you will be confused in the examination if you don't know the right choices, the right things, right countries. आपको उलझाने के लिए देश के नाम में उलटफेर किया जाएगा. आपको सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपको देश के नाम में कुछ उलटफेर रखा जाएगा. तो यदि आप सही देश जानते हैं देन ओनली तभी आप सही विकल्प पे सही चिन्ह लगा पाएंगे, सही विकल्प को आप चिन्हित कर पाएंगे. ठीक है ना. अब कुशियारा वाटर शेयरिंग, मैंने पहले ही कहा था बांग्लादेश के साथ इंडिया के कितने हैं? 54 रिवर्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. 54 रिवर्स पास थ्रू इंडो बांग्लादेश बॉर्डर. यहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ द नंबर ऑफ रिवर्स विच पासेस थ्रू इंडो बांग्लादेश बॉर्डर. 54, 55, 56, 57, 58. ठीक है. 5 choices are given, 5 विकल्प दिए गए हैं. आपको सही मालूम होगा. इट इज 54. इट इज ओनली 54. यहाँ 55 भी नहीं है. What I have written here? It is 54. Be very careful. It is 54. And बांग्लादेश ने कहा है कि तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट.
ये डिस्प्यूट पे है अभी। ये एग्रीमेंट हो चुका है, तीस्ता वाटर एग्रीमेंट, परंतु ये डिस्प्यूट में है। दो वाटर एग्रीमेंट जो डिस्प्यूट में, एक डिस्प्यूट में है, एक है गंगा। गंगा का तो सॉल्व हो चुका है फरक्का के साथ, दैट हैज बीन सॉल्व। तीस्ता अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। 2011 में ये एग्रीमेंट हो गया था। दिस एग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड इन द ईयर 2011, परंतु ये फाइनलाइज नहीं हो रहा है। इंडियन साइड इज गेटिंग वेरी लेस वाटर कंपेयर टू बांग्लादेश, इसलिए ये फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। इसमें 2 स्टेट्स अपोज कर रहे हैं, एक है वेस्ट बंगाल, एक पश्चिम बंगाल। बंगाल इस पे अपोज कर रहे हैं, और एक सिक्किम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु आर द 2 इंडियन स्टेट्स अपोजिंग द तीस्ता प्रोजेक्ट। तो यहां पर तो मैंने बांग्लादेश लिखा है, और एक स्टेट है दैट इज सिक्किम। सिक्किम इज ऑल्सो अपोजिंग नाउ विथ वेस्ट बंगाल। तीस्ता में बांग्लादेश को जो हमने पानी का जो प्रावधान रखा है देने का, वो थोड़ा कम किया जाए। ठीक है, गंगा की पानी का जो हमने विभाजन किया था, गंगा की पानी का जो हमने बनाया था, व्हाट वी हैव टोल्ड इन द अर्लियर थिंग इन द एग्रीमेंट, इट हैज बीन पार्शियली रिजॉल्व, बट तीस्ता हैज बिकम ए पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। तीस्ता and the Sheikh Hasina, when she has come to India only to resolve this thing, Indian government has assured her of full cooperation, that in the next, within the 1 year or 1.5 years, India will try to resolve this issue. It has been hanging fire from the year 2011. It is more than a decade, but it has been finalized in Bangladesh favor. Now Indian side is telling it has been finalized in Bangladesh favor. I will give you the figures, कितने क्यूसिक्स है, but that is not very important from your examination point of view. आपको पूछेंगे कि डिस्प्यूट कहाँ है इंडिया के साथ बांग्लादेश में, वाटर डिस्प्यूट कहाँ है, तो वाटर डिस्प्यूट आपको दे देंगे, गैंजेस दे देंगे, ब्रह्मपुत्र दे देंगे, आपको तीस्ता दे देंगे, पद्मा दे देंगे। 4 choices are given. They will now mix it up. So actually the problem is with तीस्ता। ठीक है, देखिए ये जो कुशियारा रिवर, मैंने आपको बोला था ना बांग्लादेश में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। हाँ, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर इन बांग्लादेश एंड असम, कुशियारा रिवर। इसमें number of questions are asked in the examination. People always talk about तीस्ता, गंजेस, ब्रह्मपुत्र, और एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे आपको कुशियारा रिवर से। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर इन बांग्लादेश एंड असम। इंडिया में बांग्लादेश का तो है ही कुशियारा, इंडिया के किस साइड में है, तो इंडिया के किस साइड को टच करते हैं, ये इंडिया के टच करते हैं असम को, कुशियारा। ठीक है, the waters of the Kushiara originate in the state of Nagaland and pick up tributaries from Manipur, Mizoram and Assam. देखिए यहाँ पर एक टिपिकल आ गया है, नागालैंड। कुशियारा जो है ये ओरिजिनेट करता है नागालैंड से। हमने कहा था ना आपको, there are 7 northeastern states, and उसमें यहाँ पर आ गया है, it is originate in the state of Nagaland and pick up tributaries from Manipur, Mizoram and Assam। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। कुशियारा कहाँ से स्टार्ट करती है, द स्टेट ऑफ नागालैंड, एंड दे पिक अप ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। कुशियारा का ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ है, नागालैंड।
It flows into Bangladesh. It flows to Bangladesh, but it originates in Nagaland here. So generally the choices will be given. जनरली हम जानते हैं क्या है, असम त्रिपुरा तो सभी जानते हैं, मेघालय मिजोरम, यहाँ पर एक थर्ड स्टेट फिफ्थ स्टेट आ गया नागालैंड. पीपल जनरली डोंट टॉक अबाउट नागालैंड. यहाँ पर कुशियारा रिवर कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देगा, असम त्रिपुरा नागालैंड मेघालय. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल मार्क एज असम और त्रिपुरा. नागालैंड इज द वेरी टिपिकल थिंग हियर. ठीक है. इट फॉर्म्स ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर as a branch of the Barak River. ठीक है. When the Barak separates into the Kushiara and Surma. Barak नदी के दो भाग होते हैं. ये मैप होने से I could have showed you the map. So the map would have been very clear कि किस तरह से दो भाग हुए हैं, दो ट्रिब्यूटरीज हुए हैं कुशियारा के बराक से. ठीक है. बराक सेपरेट करते हैं कुशियारा और सुरमा में. फ्रॉम इट्स ओरिजिन एट द माउथ ऑफ द बराक, कुशियारा रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड्स फॉर्मिंग द बाउंड्री बिटवीन असम एंड द सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिलेट एक्चुअली इट वाज एन इंडियन पार्ट बिफोर पार्टीशन. पार्टीशन के टाइम में रेफरेंडम किया था एंड सिलेट के पीपल ने एग्री किया कि दे विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान. तो सिलेट वेंट टू पाकिस्तान साइड एंड दैट पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज नाउ बांग्लादेश. ठीक है. तो ये जो कनेक्ट हो रहे हैं, कुशियारा रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड फॉर्मिंग द बाउंड्री. कुशियारा रिवर जो है ये बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश थ्रू द असम साइड, क्योंकि ये असम एंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश को सेपरेट करता है. पद्मा जो है इट इज अ बॉर्डर रिवर बिटवीन इंडिया, इंडियन साइड के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को. कुशियारा जो है किस राज्य के लिए है पद्मा? बंगाल और बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश साइड के लिए. और कुशियारा जो है इट इज बिटवीन असम एंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश. ठीक है. और सिंधु नदी जो है इंडस है उस तरफ, वो है एक्चुअली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में. और भी डिफरेंट रिवर्स है, पंजाब में भी, फिरोजपुर में भी देयर आर डिफरेंट रिवर्स विच आई विल डिस्कस व्हेन आई डिस्कस अबाउट इंडो पाकिस्तान. ठीक है. After that river forms several streams. It is joined the Khowai River and the head southwest, where it is rejoined by Surma and becomes the Meghna River. तो मेघना रिवर और एक इंपॉर्टेंट रिवर है बांग्लादेश में, मेघना. ये मेघना रिवर, पद्मा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर. जो भी डिस्प्यूट है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, एक्चुअली इट इज बिटवीन द रिवर साइड. The river is the point of dispute between India and Bangladesh. ठीक है. तो ये आप यू आर वेरी क्लियर कि इस तरह से है, आपको हम बता दिए. ठीक है. वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. टू टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट मैंने कहा है, द तीस्ता रिवर डिस्प्यूट एंड द गैंजेस रिवर डिस्प्यूट. ये है द टू लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि व्हाट आर द टू डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बिटवीन द टू रिवर्स. दे विल आस्क यू इन द एग्जामिनेशन, द गैंजेस एंड द तीस्ता. तीस्ता. ठीक है. तीस्ता रिवर डिस्प्यूट एंड द गैंजेस रिवर डिस्प्यूट. दीज आर द टू इंपॉर्टेंट, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. These are the very two long-standing conflicts between India and Bangladesh. Time হয়ে গেছে না? ঘুমাচ্ছিস ঠিক. मैं आपको बताया था ना जो डिस्प्यूट के बारे में. आई हैव टॉक्ड टू यू अबाउट द डिस्प्यूट between the Ganges and the
Tista. What is the point of dispute? I told you in the earlier part of my lecture, and I will now tell you the major points where the dispute is there between India and Bangladesh in the Ganges part and the Tista part, which is very important. Always know the dispute. कहाँ पर dispute है? Dispute पर ही क्वेश्चन रहेंगे. जो चीज आसानी से चल रहे हैं उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे. जहां पर विरोधाभास है, जहां पर कुछ जटिलताएं हैं, वहीं पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे आपको घेरने के लिए. Whether you are clear about the things or not. इसलिए जो गैंजेस दो डिस्प्यूट है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, वेरी क्लियर, दैट इज गैंजेस एंड तिस्ता. तिस्ता सॉल्व करने के लिए आई थी. गैंजेस मोर और लेस रिजॉल्व है. अभी भी डिस्प्यूट है फरक्का को लेकर. देयर इज अ डिस्प्यूट बट इज मोर और लेस रिजॉल्व. बट तिस्ता, it is a conflict now between India and Bangladesh. There are no signs of any resolution till date. The Indian government is assuring time and again it will be resolved, but still we find no signs of any resolution from the Indian side. And Bangladesh is very eager to solve the Tista water. If Tista water issue is solved, Bangladesh will get a lot of Bangladesh's business will get a lot of momentum. And they are always asking for the larger part of the Tista river. They are not asking about the Ganges, but the Farakka part, they always say that India has been the proper beneficiary. But Tista agreement, it has been made in their favor. So in the water signing agreement with the Ganges in India was signed in the year 1996. Now it is going to end 30 years. It was 30 years engagement. This engagement was for 30 years. The treaty established a 30-year water sharing agreement. It was a 30-year water sharing agreement. And this agreement is now about to expire. Very clear? Ganges river dispute कब साइन हुए थे? ये क्वेश्चन आ गया. ठीक है, ये कितने साल की एग्रीमेंट थी? 30 years, 40 years, 35 years, 45 years. 4 choices will be there. साइन कब हुए थे उस पर एक क्वेश्चन रहेंगे. कितने ईयर के एग्रीमेंट हुए थे? इट माइट बी ए क्वेश्चन. और कितने वाटर इंडिया विड्रॉ कर पाएंगे बांग्लादेश से और कितने वाटर बांग्लादेश ले पाएंगे गैंजेस से? दिस वाज द इंपॉर्टेंट बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. इंडिया विल ड्रॉ 40 क्यूसेक्स. वाटर के जो यूनिट है क्यूसेक्स है. ठीक है, एंड बांग्लादेश कैन विड्रॉ 35,000 क्यूसेक्स at the Farakka barrage. This was the main problem between the Farakka barrage. इंडियन साइड को 40,000 है, 35,000 बांग्लादेश को है गैंजेस में. ठीक है, मोर और लेस रिजॉल्व्ड, बट सम प्रॉब्लम्स आर देयर. फरक्का को मेंटेन कलकत्ता पोर्ट, to maintain the Calcutta port, this agreement was reached and this Farakka barrage was built. पर फरक्का बैरेज में यदि वाटर फ्लो, यदि पानी घट जाए 70,000 से बिलो हो जाए तो इट विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. सपोज वहां 60 हो जाए, इट विल फॉल्स बिलो 70,000, इट विल कम टू 60. देन इंडिया एंड बांग्लादेश विल शेयर 30-30. अदरवाइज इंडिया विल टेक 40 and Bangladesh will take 35,000. ये important question है water sharing agreement. तो bone of contention क्या है typical गंगा वाला water dispute में? When this agreement was signed 1996.
कितने ईयर्स के लिए साइन थे? 30 ईयर्स। अब 3 साल में ही दिस अग्रीमेंट इज नाउ, वी हैव टू renegotiate the agreement, we will renegotiate the agreement, or we will give to an extension to the agreement. The agreement will expire. There will be relook at the agreement. Time is over. If ability at it falls below 70,000, it will be divided equally between the two countries. Second, जो main point of contention था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, that was the तीस्ता रिवर. तीस्ता के अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है. देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विच वाज वैलिड टिल 1985, ठीक है. उसके बाद ही तो द प्रॉब्लम केम फ्रॉम द इंडियन साइड, फ्रॉम द बांग्लादेश साइड एंड फ्रॉम द इंडियन साइड. दिस एग्रीमेंट गेव इंडिया 39%. देखिए फिगर्स, नाउ वी रिमेंबर द फिगर्स, एंड बांग्लादेश 36% of the Tista river, and 25% of the water remain unallocated. 39, 36 and 25. This 25, Bangladesh now wants this 25 from the Indian side, and India is not going to share this 25 with the Bangladesh side. This is the point of contention. ये point of conflict है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में. ओनली बांग्लादेश को 36 दिया गया. बांग्लादेश का कहना है कि तीस्ता में से हमें और भी दो. ये 25 जो परसेंट जो वाटर है, इसमें से इंडिया मैक्सिमम ले ले. बांग्लादेश को इसी पॉइंट को लेकर बांग्लादेश हैज ऑब्जेक्शन. बांग्लादेश इज आस्किंग दैट आउट ऑफ 25% गिव मी मोर. इंडिया इज टेकिंग द एंटायर 25%. इन 2011 an interim deal was supposed to last for 15 years, which gave India 42.5 and Bangladesh 37.5. एक एग्रीमेंट डील हो गया था, एवरीथिंग वाज फाइनलाइज्ड. उसके बाद भी नहीं हो पाया क्योंकि 2 states have opposed it, West Bengal and Sikkim. ठीक है, 2 states have opposed it. My chapter now comes to an end. Today I have talked about the river dispute. Tomorrow I will talk about the trades between India and Bangladesh and all the other parts, other things, the different treaties, the different relations between India and the USA. This I will cover in the next class, and I will cover from the examination point of view. India US, that will be the most important part, the trade part. Thank you. If you have any questions to ask, you can ask me, and I will meet you tomorrow with my next session. Thank you. কি বলছে? কোন